I'm in a space where I can put out those songs, put out those videos, those imageries that are running in my head. बरसात is a labor of love, we can say that, because इसमें सिवाय हमारे इमोशंस के, सिवाय हमारे प्यार के, सिवाय हमारे संगीत के और कुछ नहीं है. I think me and dad, I call him Dubs. I don't even call him dad. We are like friends. दादी के साथ उन लोगों का जो बॉन्डिंग था, उनके लिए गाना गाते थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, उनको हगी पगी करते थे, तो बहुत बहुत अमेजिंग इन लोगों का रहा है. Hi everyone, this is Arman Malik. You're watching Bollywood Hangama. Do subscribe. डब्बू जी and Arman, welcome on Bollywood Hangama. Hi Fairuzan sir, how are you? Very well, आप कैसे हैं आप? All good. और डब्बू जी कैसा लगता है आपको, बेटे जो है इतना कमाल का काम कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं? हाँ, that's a great feeling. And Barsat is like one of our family dreams coming true. Okay, hum log in this time we have been able to do this and come out with a heartfelt, emotional, song for everybody to hear. And Barsat is a labor of love, we can say that, because इसमें सिवाय हमारे इमोशंस के, सिवाय हमारे प्यार के, सिवाय हमारे संगीत के और कुछ नहीं है. It's the purest form of what we all have put together to come out with this. डब्बू जी, मुझे याद है जब मैं एक बार अरमान का इंटरव्यू करने के लिए आपके घर पे आया था, एंड आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कुछ तो आपके माइंड में एक आइडिया था, कुछ आप डायरेक्ट करने वाले थे उस वक्त भी, एंड यू वर डिस्कसिंग दैट मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ. तो ये डायरेक्शन का जो आपको जो एक इंटरेस्ट आपको जो आया है, ये कैसे आपको आया? आई थिंक इट इज के हमारा जो MWM होम लेबल है, जिसके अंदर हम ये गाने डालना चाहते थे, आई थिंक इट्स कम आउट ऑफ नेसेसिटी. इट इज समथिंग दैट वी हैड टू कीप ऑन डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो मैंने अभी 7-8 गाने ऑलरेडी, जो कुछ मैंने अपने पर शूट किए, कुछ कंपोज किए और उनको अपने चैनल पे डालने की कोशिश की. वहां से ये चीज का आई थिंक जन्म हुआ है. आई ऑलवेज हैड, but there was nothing that I want to be a passionate director or I want to turn into a director. ऐसी कोई मतलब there was no wish like that. The only thing, it has come out from an thing that we need to do something which we passionately feel about. And with so many years of experience and so much that has gone by, and in today's time and place, if we get children hearing you and they wanting with so much of their own ideation happening, and they get inspired by what I'm saying, so it was like a high for me too. Barsat, they said that the way you are explaining and the way the things are coming in your mind, you might as well direct it. So I think it is a great feeling, and that's how it happened. And Arman, आपको क्या लगता है कि ये जो एक जिस तरीके का धीरे धीरे ट्रेंड होता जा रहा है कि that gradually artists they are focusing on their own digital platforms, अपने खुद के चैनल्स हैं या फिर फैमिली के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं. जो कंजम्पशन है वो डिजिटली बहुत ज्यादा हो रहा है. करेक्ट. तो इंक्रीजिंगली आपको लगता है कि ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा मामला, और जो भी आर्टिस्ट के ग्रीवेंसेस थे कि फ्रीडम होना चाहिए और एक चॉइस होना चाहिए कि जिस तरीके गाने आप बनाना चाहें वैसे आप बनाएं, इस तरीके के म्यूजिक वीडियोस डब्बू जी बनाना चाहें वैसे बनाएं और उसके बाद लोगों के सामने रखें. Do you think that is the future in a way? I personally am loving what's happening right now in India. It is one of the best phases for the music industry because I think a lot of artists उनको एक freedom मिल रही है to creatively express what they want to do, how they want to do it. And जब आप labels के साथ काम करते हो तो they have a अलग नजरिया होता है उनका, the way they want to present you or the way they want to do it. Sometimes they use singers as lip sync people, and then there's actors portraying the story and stuff like that. People are doing those kind of singles today also, but I personally believe that as a music artist, the artist himself should express their creativity in their own way, like how I'm part of my music videos. That is something that I wanted to consciously do as a singer, and I just didn't want to be as a playback singer. I wanted to be a whole-rounded artist. So for me, the kind of freedom that I have gotten in this phase, be it with the home label MWM or be it with all the other singles that I'm currently working on and I'm putting out. मेरे mind में इतने सारे creative चीजें हैं वो अभी तक I have not been able to put it out, and I feel like now I'm in a space where I can put out those songs, put out those videos, those
imageries that are running in my head. And certain songs, you know, as artists, we kind of keep it to ourselves because we feel like, हाँ यार films के लिए नहीं जाएंगे, these won't suit them, or you know, ठीक है बाद में देखते what happens with it. So I think a lot of these songs, there's a lot of golden stuff kept in a trunk at home in terms of these songs in our laptops and whatever we're working on, and I feel like those that music should see the light of day. And I think we have a perfect kind of a platform now with the home label that we have you know, managed to establish, and also in the future how I want to put my non-film music. I feel as a creator I have utmost freedom to go anywhere I want, whatever I want to do. All right, and Arman, tell us something about your bonding with Dabbu ji. I saw him with you in Dubai as well for A.R. Rahman's concert. Correct. So what sort of bonding do you have? I think me and Dad, I call him Dubs. I don't even call him Dad. We are like friends. We hang out. We you know, a lot of times on my concerts and tours, he has accompanied me, and we pretty much talk about everything under the sun. And matlab, I feel like if there's anyone that I can, you know, just share my innermost feelings with, innermost issues as creative people, I think we have a lot of craziness going on in our head and a lot of noise. And I feel like my dad is like my best friend, where I can, you know, kind of just say stuff to him and get my mind to get decluttered. And I think he's been my support in the last few years, more than he has been obviously in all along. He's been my support, but the last few years for me as an artist have been transformational. I've changed my lane. I've been doing different things, so my mind also is in very, very different places. So I feel like Dad is my best friend. The relationship I have with him, I don't think I have with anyone else. All right, Dabbu ji, अभी अमाल और अरमान से कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपकी वालदा का भी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ, एंड जिस तरीके से दोनों ने सोशल मीडिया पे अपने रिश्ते के बारे में शेयर किया, और ऑब्वियसली बहुत ही हार्टफेल्ट मैसेजेस थे दोनों की तरफ से. और जब मेरी बात भी हुई तो उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि दैट वाज सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दैट दे हैड विद हिम, with her, and what she meant to them. तो बहुत बार जैसे देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को आज के टाइम पे इतनी भाग दौड़ की जिंदगी होती है, लोग शायद उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी परवरिश जो है कामयाब है. नहीं, बहुत प्यार है, और दादी के साथ उन लोगों का जो बॉन्डिंग था वो इतना सारा, उन्होंने उनके साथ मस्ती किया है, उनके साथ उनके लिए गाना गाते थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, उनको हगी पगी करते थे. तो बहुत बहुत अमेजिंग इन लोगों का रहा है. और इनके फॉर्मेटिव इयर्स में डैड, दैट इज माय डैड श्री सरदार मलिक, एंड मॉम, दे हैव the first 10 years of their life they have lived with them, okay, when they were growing. So वो formation years के अंदर जो love और bonding उनको मिली, और जो musical wealth मिली है मेरे father से, that was something which was really blessed. कि होता है ना कि पूरा divine intervention था कि सरदार मलिक साहब का जो पूरा wealth, जो पूरी emotional and classical music की जो knowledge थी, वो दोनों बच्चों को उन्होंने अपने पास रखा, क्योंकि मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक they used to be with their grandparents, and Dada used to be playing the harmonium and the tanpura. So बहुत कमाल का इनका वो रिश्ता रहा है, and the close bonding, and they loved their grandparents more than they loved me or Jyoti. It was always double or 4 times more higher, the love for the grandparents. Of course, and जब ये आपने बरसात, आपने जब गाना आपने सुना, अमाल ने कंपोज किया है, अरमान ने उसको गाया है, बहुत ही कमाल का. Obviously, खैर, he always loves to surprise, and अमाल के कॉम्पोजिशन में आई थिंक एक मिनिमलिस्टिक एलिमेंट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है. अगर आप कम में ज्यादा कह पाए तो वो हमेशा it always stands out. तो when you heard the final song, आपने कैसे विजुअलाइज किया कि इसको कैसे हमें इसको पिक्चराइज करना चाहिए? मैं बहुत इमोशनल हो गया था when I heard it. I really had so many vivid imaginations, pictures and images, pictures and mind के मैंने suddenly I started searching for references जो मेरे mind में आ रहे थे, और hundreds of things that were coming in my mind. So suddenly I thought of making them into a working book, and I think in one night by 3:30, 4 o'clock, I had the whole thing in my thing, and I made a folder and sent it to both the boys. This is what I'm imagining, and that is when they said, "Dad, अगर ऐसा है तो I think ये जिस emotion से आपकी तरफ आ रहा है, आप execute करो."
and you've been saying that for the longest time. And just before that, Tum Yun Hi Kabhi had released, which I had sung, and it was picturized on me also. So they were also very ecstatic about that, and they liked what happened with that small video. And that is how thing has become like a dream come true for all of us. Fantastic. डब्बू जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे. एक्चुअली कल हमने अरमान के फैन से कुछ क्वेश्चंस लिए थे. अब मुझे खैर हमेशा ही मतलब कमाल का रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन कल जो है हमको करीबन हजारों में सवाल मिले हैं इनके लिए. और बड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है इस वक्त कि कितने सवाल आप पॉसिबली ले सकते हैं. तो अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं कुछ लम्हों के लिए आपके बेटे को चुरा लूं आपसे. Go ahead. Thank you so much. Thank you so much. Hi everyone, this is Arman Malik. You're watching Bollywood Hungama. Do subscribe.